कि मेरा जो dealing females and men in all different fields and coming from Pakistan and leaving an impact and leading a very predominant male group. So I just wanted to make sure कि मैं थोड़ा सा वापस अपने मुल्क को किसी तरह मैं दूँ. I mean, ultimately I'm from, that's my identity. I'm from Pakistan. Pakistan is my home and my country. So that is the intent. So, but this session is not about me. This session is about all of you. And मेरा काम है just to help guide the discussion. But I don't want this to just be a place where people talk. I want us to, at the end of this, तो मेरे objectives जो हैं वो ये हैं कि at the end of all of this हमारे पास actionable items हों कि हमने करना क्या है. What happens after today? This is the easy part. कि सबको जमा करके हम बातें सुने वो हम we can all do forever. लेकिन हमने करना उसके बाद क्या है. तो Nazish is going to be taking notes. तो जो हम कहेंगे we're going to come up with actionable items जो reasonable होंगे between 5 to 10 and then we're come up with a timeline ताकि this group can then help be held accountable कि जी 6 months में क्या है 1 year में क्या है 3 years में क्या है because we have to make progress वरना this so that's I just want to make sure that's what our ultimate goal is. So I would invite both men and females both to start thinking कि आपने क्या points बोलने हैं to move the needle, right? At the end of the day हमने एक साल में कहाँ females and surgery को लेके जाना है. The last 30 minutes of this is going to be open to the audience. तो आपके पास बहुत time होगा अपने सवाल पूछने का, comments, all of that. So till that, I request you just hold your questions because we have an agenda. We want to make sure कि जो panelists आए हैं, they उनकी expertise और उनकी experience को हम highlight करें and in the last 30 minutes we'll open it up to the floor. So when I was thinking about this and most excited about this session more than the summit, sorry, but I would like to know coming from, I mean, not being in Pakistan now for 51 years, जो काफी लंबा time है. मेरा पहले है कि भाई first objective is what is the current state? जब हमें पता नहीं होगा कि हम आज किधर हैं, हमें आगे का कैसे पता चलेगा? So that's the first objective. Let's gauge कि अभी current state क्या है of females in surgery. And females in surgery का मतलब ये नहीं just surgeons. जो पढ़ना चाह रहे हैं medical students, residents, I want to open it up to OR nurses, staff. Like there is no end. अगर females हम निकाल दें अपने healthcare system से आप एक दिन काम नहीं कर सकते. So you have to realize कि कितनी ज़्यादा importance है females का not just as a party जी हमारी आवाज़ नहीं as a need. You need females. This healthcare system needs females functioning. तो उसमें सबके लिए बेहतरी है, right? For the men, the women, the patients. तो उस नियत से let's see what is the current state. The second is where do you think we need to go? तो जो मेरी panelists हैं मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी. तो these are the three major things कि what is the current state? Where do you think we need to go? Like where do you want to see us in 5 years? And how are we going to get there? Three very simple questions, and this is going to be the crux of this. So, without any further ado, मैं आपसे if I'll just go in a line, ठीक है? तो I'm bad with names. तो मुझे I need the name. अच्छा, तो अगर आप मुझे बताएं one by one कि भाई आपके ख्याल से what is the current state of women in surgery? I think we need a microphone. If like it's a conflict, that मतलब ठीक है मैम ठीक है current state of women in surgical specialties or current state of women in my specialty. ये आपको हर फीचर सबको I think overall, broadly surgery में अगर आपने अपने specialty पे focus करना है, it's up to you. Like, as far as the status of women, the status of medical school जो exit है और उनका जो bulk आ रहा है उसमें से जो proportion है into the surgical trainings is good because women have become more focused. We have a lot more women in med schools
and a lot of them are very focused regarding their trainings, and a lot of them want to do something, and surgery has its own hype, like when you do a surgery and the patient goes home after 1 day or 2 days, it gives you a hype. So though it is very, very demanding for women, but still, I think a lot of women are coming into surgical fields. The bulk of them are going into general surgery and plastics, as all over the world. Because all over the world, you see that plastics is being taken over by women slowly and gradually. And I think very rightly. A lot of women are going into eye, which is another surgical specialty. Uh, as far as my own specialty is concerned, over 53% of the population of this country is women, which is huge. जब आप उसको हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ के साथ करके देखें तो वो 52-53% जो है, that's a huge number. And all of them are, living in conditions which you would not say that they are getting ample health care. So still, we are very few in urology. Very few, बस गिने चुने कुछ लोग. Right. I am there in Peshawar. I have trained 4 surgical trainees, and they are still passing their exams, and they'll be coming back to urology, inshallah. There's another one in Peshawar, and then I don't know about the statistics in Islamabad and Rawalpindi, but the rest are all in Karachi, and most of them are the trainees of Aga Khan. As after Balu hai, urology में What about the rest of the world? जी मैं अस्तर सोच क्या नहीं मैं यूरोगाइनी नहीं I am talking about core urology because we are the core urologists. That is another subspecialty. तो फिर उसके बाद as far as the job conditions are concerned, most of them have trained from Aga Khan and they have gone into private hospitals. जो हमारे provincial government के setups हैं उसमें there are very few women. Because then you see that's the old patriarchal setup. ठीक है ना, जो आप जो कह रहे हो ना कि we have to contact not just eye to eye, but we have to be twice as good to contend, to be there. So जो provincial setups हैं उसमें जो मेरे साथ एक और junior colleague है वो हमारे एक और semi provincial setup में है पेशावर में, कराची में एक 2 लड़कियां हैं और the most of them are at the level of जो even Aga Khan में भी हैं, they have reached, just one of them has reached the level of assistant professor. So I am the first to reach the level of associate professor. And जब आप डेमोग्राफिक्स को देखते हैं तो वो थोड़ी सी डेमोग्राफिक्स हमारी एक कराची की बच्ची ने जो ट्रेन की थी उसने वो इकट्ठे किए हैं कुछ हमारी 7 कंट्रीज को, ठीक है, तो हम में से जो है कोई सारी 7 कंट्रीज में मिला के विच इज द साउथ एशिया, we are just 2 women who have reached up to the level of associate professors, and there were just two women in provincial setups, like in government setups in India, who became professors. And the rest जो जितनी भी qualified है अभी भी वो सिर्फ AP के level पे हैं या instructor के level पे पर. ठीक है, तो just to summarize 3 points, because I want to make sure कि हम move along करें. जी. कि एक तो subspecialty, if you can write this down, urology जैसी subspecialty में बहुत कमी है, और फिर leadership positions में तो they are very poorly. And I would just step forward. I will take one step forward. As far as being in charge of a unit is concerned, there is none. Like I am the first. ठीक है. ठीक है, and in I would say that my province is advanced. Yeah. Then the rest of the country and the rest of the country. Yeah. Yes, खुदा का शुक्र है. हाँ जी. It's his blessing. That to reach a position where no woman has reached in provincial setup to be in charge of a urology department. नहीं, it's incredible. That's why we were happy कि आप आए हैं. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Rakshanda, right? Sure. Okay. आपका क्वेश्चन नंबर 1 था प्रेजेंट Present, हाँ. सिंस मैंने बहुत ज्यादा जमाना देखा हुआ है from 1981 to 17 I was in public service and then I had my own practice.
but I have been in contact with all my कह रही है कि यहाँ के students, बाहर के students. So what I feel is in our time हमें concept ही नहीं होता था कि हम सर्जरी में जाएं. So it was something very strange कि सर्जरी में जाएं क्योंकि सर्जरी was like reserved for men. So when I came as a house officer to my two जो surgeons थे, 2 units थे polyclinic में, एक आतिफ के father थे डॉक्टर इनाम शाही और दूसरे मेरे जिनके साथ मैं ट्रेन हुई हूँ मेरे मेंटोर डॉक्टर सिकंदर रियाज खान. They were very encouraging. वो they used to call me छोटी और कहते थे कि छोटी बड़ी तेज है. इसको एक दो अपेंडिक्स दे कभी यहाँ से दी जाएगी. So that is what happened. But with time I used to be the only one with a male had any problem with them. जब भी प्रॉब्लम हुई उधर ही खड़े होकर फाइट कर लिया उनसे, उधर ही देर अंदर हिसाब चुका लिया. कभी किसी से शिकायत नहीं की लाने ये करता है वो नहीं करता. मेरा ख्याल है कि एवरी फीमेल शुड बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड तो अगर कर सकते हैं. तो दूसरा ये है अपनी अपनी जगह खुद बनानी होती है. उसके बाद फिर आगे चले तो उन्होंने बहुत ज्यादा तो उन्होंने सपोर्ट किया. एंड फिर जब मैं खुद किसी पोजीशन में आई जैसे हम एसआर थे तो हाउस ऑफिसर्स ने आना शुरू किया तो लोगों ने ड्रिफ्ट होना शुरू किया टुवर्ड्स सर्जरी. तो आई वुड एनकरेज ईच एंड एवरी फीमेल. लोगों की माँ ने आके पूछा क्या हम अपनी बेटियों को यहाँ कर सकते हैं तो उससे व्हाई नॉट. इसमें फर्क ही क्या है. अगर औरत बंदूक उठा सकती है जंगलों में जा सकती है तो व्हाई नॉट. ये काम इतना मुश्किल नहीं है बल्कि बच्चों के साथ रातें जाग जाग के वी आर मोर ट्रेंड नाइट्स पे. खैर वो फिर आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू ब्रिंग और अट्रैक्ट गर्ल्स टुवर्ड्स सर्जरी. और आई एम सो प्राउड इस वक्त पेंस में I was the one who started, and mashallah, I think in each and every unit there is more strength of female surgeons which I see. तो मेरे ख्याल में तो लड़कियां मतलब जितने भी फीमेल डॉक्टर्स हैं they are very strong. और I use encourage मैं हर अपने मेल जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स एंड फीमेल्स को ये कहती थी कि बिफोर एंटरिंग हॉस्पिटल मैं सुबह डॉक्टर आदिल को भी बता रही थी कि अपना जेंडर और अपनी ईगो गेट के बाहर छोड़ा है करो और जाने से पहले दोनों को साथ लेके वापस करो. you know. So and I'm very happy for these ladies के ऊपर आगे हैं. But second question क्या था स्नैच. नहीं, वो मेरा प्लान ये था कि मैं सबसे एक एक करके पूछूं कि जी. करंट स्टेट क्या है जी ताकि सबका पर्सपेक्टिव हो just to answer that question. Then we go to the next question which would be where do you think we need to go? So I think आपने जो अपनी history share की is जी. very valuable and that would go be into the third thing कि हम कैसे पहुंचेंगे. जी. तो उसमें वो जो advice है कि अपनी strength की और अपनी ego और वो जी. सब चीजें जी. तो would like to revisit that और put that third part कि जी हमें पहुंचना वहाँ पे कैसे है. कि हमें दोनों साइड की बातें सुननी है ना. There are obviously men who feel Yes. a certain way. I wish we would see more from our female surgery students. तो उनकी भी voice सुनना जरूरी है. Which is why I'm making that with the men here. क्योंकि अगर सारी औरतों वाला सेशन हो उसमें तो फिर वही तो we are just talking to ourselves, right? So we have to talk with each other. Yes. तो वो सामने we have to talk with each other. So वो how do we get there? वो third वाला part है जिसमें I would love to we get participation from our male Yes. colleagues here. तो अगर अभी इसको मैं current state अगर मैं for the interest time what I understand, I think that's a good thing. That's interesting. So if we can pass the mic on
तो आपके ख्याल से current Excuse me, state. Dr. Raya, let me introduce Dr. Iram. He has been late, but he's already. No, I'm actually, you said you were expecting He me. is What should I- one of our finest breast and oncoplastic surgeons trained in UK. He's been direct trainee of Dr. Rakshana. Yes. So there is a full Zabardast. production. Zabardast. The mentor mentee Mentor and mentee. together, ये तो बहुत जबरदस्त. And if we can just brief you the teams हमारे बता दें ताकि वो हाँ, तो- absolutely आप हाँ जी बिल्कुल. तो current state हम कह रहे हैं कि what is the current state, अगर एक एक से हम पूछेंगे और हम request करेंगे कि between 1 to 2 minutes आप अपना वो answer रखें ताकि फिर बाकी सवाल. Sure. So I think a lot has been covered regarding the strength. Yes, we are getting more females, and they are doing their best to adjust and be on the higher positions. But I think with regards to what kind of scenario is the question. It was probably although ये change थोड़ा slow आया है, लेकिन yes there is a change, but उस level पे change आ गया कि female are driven to go to male dominated fields, but what kind of support they are getting over there? Because obviously biologically females have to go through many phases. It's marriage, it's children, and their family life. So what kind of support we are having is a big question, and I think that is something we need to look into. So as a current state में support is the bigger issue, not the number of people Number, who yes, get yes. So, sick. Not the females yeah, who get support is a very important part of it, or which, मतलब, it's like there is no equity or equality in it. Some trainees might be lucky to have a supervisor or a department like this, but some are still struggling. Some of them have even given up on their training, and some have. ये current state में ना ये आप highlight करें. So what Yes. is the, if you can elaborate a little bit. Yeah, so this is a reality, and then obviously marriage, marriage is it's a biggest bet they play. So whether it will work for them or not, whether they will be supported from the family point of view or not is the question. But on the other side, where the workplace need to be very supportive. And then going through the childbirth, whether they are supported. So I had an experience, one of my son was born here in Pakistan, the other was born in the UK, and there was a stark difference that I saw with regards to the support that I received. So maternity leave एक बहुत बड़ा वो है, there is just 3 months mat leave, and if you wish to breastfeed, there is no support. There is no support with regards to the child care, especially in the public sector hospital. It is completely thought to be unprofessional to talk about your childcare issues, where it is the biggest thing. So, what I've seen is that you have to act like a man when you are. Yes, physically we can act like a man, but the thing is we cannot biologically change. तो current state इस वक्त breastfeeding की क्या है? No, I would say there's absolutely no support. I wish to breastfeed my child, and I asked for duties which are not throughout the night, but I was supported to some extent, and then later I was refused. Okay, it's something you can manage, you can bring the child, but there is absolutely no But place you're to feed the looking at child. it, Yes, there is a childcare which is like, I think 2 minutes toward the night. So there should be a policy making. If we have to bring our children, breastfeeding them, absolutely. I think मेरे private जगह है अभी इस वक्त films में anywhere. I was My my female can breastfeed. Like for a comment to become back on the. Right, so I just want to be अभी current state क्या है, Yeah. and then we are going to talk about it. It's like I have been in charge of my unit. When women are in key positions, we can make differences. I have made a rules for the girls and even for the nurses to bring in their kids with them, with the maids. ताकि वो जितना टाइम यूनिट में होंगी तो उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने होंगे और उनकी मेड के साथ हो.
क्योंकि तो हमारे एक जैसे हमारे someone- ट्रेनिंग्स भी Right, उनके right. बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। Right. So one issue जो current state है कि support में for a mother, especially वो जो वो breastfeeding phase में हो तो वो नहीं, ठीक है, great, thank you. If you can pass that. डॉक्टर अल्फा और I agree कि मैडम ने जैसा कहा कि हमारे पास बहुत ही 4 जनरल सर्जरी यूनिट्स। एक तो हमारा जिस तरह आया फीमेल 20 years since I graduated, मैंने अपने सामने सर्जरी को चेंज almost half of the trainings in every that we do not have faculty there in our surgical department. Currently, in the Department of General Surgery, I am the only faculty member who is actively working. The reason उनकी एसोसिएशन है, कोई किसी बहाने ट्रेनिंग करने आयरलैंड चली गई, इंग्लैंड से रिजाइन भेज दिया, देयर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ देम। आई विल नॉट कि एक ही लाठी से सबको कर देना, सबके अपने अपने फैक्टर्स बने। किसी ने छुट्टी लेकर प्राइवेट सेटअप चले गए, किसी ने बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए डीएल लेकर। एक और हमारी फर्स्ट वैस्कुलर सर्जन, फीमेल वैस्कुलर सर्जन ऑफ द पाकिस्तान, शी वाज ट्रेन्ड है, डॉक्टर मीर ने उनको कितना सपोर्ट और बिल्ड किया, वी आर विटनेस टू दैट स्टोरी, बट इवेंचुअली शी लेफ्ट। उसने अभी एफिडेविट दिया कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी आई लेफ्ट फॉर केरल। इसके अलावा जो है ये सारे इश्यूज आए, लीडरशिप पोजीशंस, फैकल्टी, जिसका मैडम ने इशू किया, बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं, वी ट्राई टू कोरिलेट विद देम। प्रोफेसर कनेक्शंस and वो 5-7 साल की ACRs he was able to take collectively। मगर तुम्हारे पास you have no I mean parental support, तुम्हारी family support इस तरह की नहीं है, तो तुम मुझसे कैसे, मतलब how will you progress? आप इरम ने बहुत अच्छी बातें की as regard to female biological changes, kids and वो सारा कुछ। I'm not married, being an unmarried female in surgery, that's you are daily told to get married to anybody. I mean, this is important on your work's life. Right, welcome. I never stopped work, but it affected me so much. And then, but I persisted. Right. Eventually, I had like senior professors. I would like to name Professor Nadeem Ahmad and then Professor Tanveer as well. When they were still, serving, they used to give me references. I was able to complete my FCPS in general surgery. I was able to get admission in masters in medical education. I'm probably the first and the youngest masters in medical education, and first from this institute. What happened was I qualified and then there was an upload. How did she manage to enroll and qualify while there was senior faculty who tried to do so? And then I was again lucky to get admission in a master's program of breast surgery. And Dr. Neil, he's sitting here, he's my referee. We in Pakistan, we had no structured training program in breast surgery. So I got myself enrolled in a paid part-time program. That was a new initiative. And I had support, I had limited support from the admin, I had support from Dr. Neil. I started my program. I was shifted to Burn Care Center. I came back, it was a very difficult time. And someday maybe I'll write a book on it. I completed the course. There was so much hostility, animosity. I cannot explain it. This is not the right forum at the moment. And then when I qualified as a breast surgeon, luckily I was able to get an assistant professor regular faculty post from the through the Federal Public Service Commission. When I came back, I had to face an inquiry, which was not even communicated to me. Still, I apologized to continue my services in the hospital. I was not allotted a separate consultant clinic to, continue my work. I had to sit with the unit in charge just to provide services to the female patients. And the patients, they,
they come with perianal diseases, they come with breast issues, and these are all literally patients in our society are shy. They cannot even communicate properly. And for almost 5 years, as a regular faculty, I had to sit in front of my senior, where it was, I had to balance my own feeling of embarrassment, the feelings of my patients. Nevertheless, I, continued. For the last year or so, Alhamdulillah, with the intervention of the secretary and the administration as well, I'm working full time, I'm working properly, I'm delivering my services as the breast surgeon, as a faculty, as a medical educationist, I'm a supervisor in general surgery as well. But it has been an uphill task and the struggle is still on. So this is what happened there in this country. Thank you. No, I was very inspired to story. Another, if I can summarize from the answer, the current state, yeah, एक तो attrition rate है, right? People are leaving. So I think you answered part of the reason why people are leaving, the barriers to be able to do what you're trained to do or what you want to do. ठीक है, तो वो एक बात है. So these two, and you got an incredible story. Thank you for your perseverance. And the third thing is, Kiji, commenting on people's personal life. Should that be part of a workspace? Assalamu alaikum. I'm Dr. Zahra Raza. I'm really privileged to be here sitting among our esteemed panelists. I'm very grateful for this opportunity. Although I am in the very start of my surgical career, and I'm sure I haven't achieved anything as much as our panelists, but still, I would like to use this opportunity to share my experiences and my opinion. I don't know how things used to be before, but ever since my surgical residency and even my career afterwards, I've had a lot of support. That includes support from my family, my supervisor, my seniors, and even my juniors. So I don't know if I'm lucky from that point of view, or I just got blessed to be in that environment. Even after my surgical residency, there was a very stagnant period in my career where I did not know what I had to do. I was really confused. I wanted to follow my passion. I could not see a way where to go ahead. And my supervisor, Dr. Atif Anam Shami, he actually boosted me at that point. And that one particular moment is maybe the reason why I'm able to be sitting here. Today, I'm practicing in a very rural town in Skardu. To be more precise, it's a district which is an hour and a half away from the main city. In the village, amongst the mountains, with very little facilities. Because of these limitations, I'm not able to do as much as I'm trained to or qualified. But this very fact that I'm practicing in such an area, I'm the only female surgeon there. In fact, I'm the only surgeon in the rural area. So that itself, you can say, I can verify this fact that to some extent, people are getting support. I wouldn't be sitting there or doing my practice if it wasn't for the support. I see women everywhere in surgery. There may be more struggles in the future. I'm just hoping for the best. But so far, it has been easy for me. So I can say that the current scenario for women in surgery is much, much better than it used to be maybe a decade ago. So that's Sorry, I would request Vice Chancellor Professor Tamir Khalik to come ahead because he occupies a very senior and very important post and has a lot of things to do, like organizing the MDCAT this weekend, rather tomorrow. Tomorrow. Yeah. So he has to go and he has to leave. So I would request him to say a few words. And then I would like every one of us to come here and have a group photo with our chief guests. Okay, chief guests. Not the VC only, but also now. This is Professor
राइट एक लम्हा फिक्रिया है एमडी कैट का एग्जाम हो रहा है पाकिस्तान में व्हिच इज एन एंट्री टेस्ट टू मेडिकल स्कूल तो अरेंजमेंट इस तरह की है कि पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं मैं सारी रात जागता रहा हूँ और टू मेक एन एग्जाम क्रेडिबल क्योंकि इसके बारे में बहुत कंप्लेंट्स हैं सो ये सिनेरियो है 2 साल पहले 280,000 children they appeared in LDCAT and this time 140 सो नंबर आधा हो गया कि आगे फ्यूचर क्या है मेडिकल साइंसेस का और मेडिसिन का और सर्जरी का यू कैन सी के लोग कम होते जा रहे हैं राइट मैं स्टार्ट करूंगा डॉक्टर रक्षंदा से व्हेन आई जॉइंड पेम्स एज ए रेजिडेंट प्रोफेसर सिकंदर है हम पहले 2 ट्रेनिंग थे सर के और जब मैंने डॉक्टर रक्षंदा को देखा तो मैंने कहा ये मैं कैसे काम करूंगा सो आई थिंक बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन जो मैंने देखा बिकॉज आई वर्क नंबर ऑफ फीमेल सर्जन एंड आई थिंक सब जानते हैं एलिसन बैगॉन फीमेल ब्रेस्ट सर्जन फ्रॉम सेंट जॉर्जेस इनका जो स्किल्स है ना दे आर बेटर देन मेल आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ I have Dr. Shanda doing axillary dissection to the perfection. इतना अच्छा करती थी और they used to count the number of lymph nodes. और मुझे पहली दफा पता चला कि 59 lymph nodes होते हैं एक्सेल में। शुरू में that was the most important part कि axillary dissection clear हो गया कि second was when you used to do the transhydral surveillance. Her hands. So जो ही हम स्टमक को कर लेते थे क्लियर मैं और सर तो मैडम आती थी और वो हाइटस में अपना हाथ डाल के used to bring the esophagus down into the abdomen and then the place. So ये तो difference है. So we should appreciate that. So now तो इसका coming फायदा मैंने भी उठाया मैडम हाँ now coming to the sport. I think आप भी इधर पीछे बात कर रहा था I think sport हर एक provide क्योंकि एक छोटी मोटी एग्जांपल होगी उसको आप एग्जांपल रखें उसको जनरलाइज ना करें जनरली मेरे 150 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफसीपीएस किया in last 25 years 150 students they have passed their FCPS उनमें 60 females so नाम लिए हैं सना का I think नाजिया is in Ireland शाइस्ता यूके में है तो आर स्टूडेंट्स तो काफी बड़ा नंबर है और मेजॉरिटी फीमेल्स के और फ्यूचर फीमेल्स का है अगर आप देखें नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन मेडिकल स्कूल तो इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट में 30% मेल्स हैं और 70% फीमेल सो नो स्कोप अगर रोबोट्स आ गए तो फिर तो और ही मसला हो जाएगा आतिफ मेरा और तुम्हारा काम खत्म तो नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट इस वक्त एकेडमिक काउंसिल जो हमारी यूनिवर्सिटी की है 50% are females. So huge number, 50% are females हैं डॉक्टर सिंधा हमारे academic council में और वो बड़े हैं they decide about the specialty को कैसे चलाना है उसमें कौन सा curriculum रखना है जो ASRB है research and study board है उसकी 40 to 50% membership females की है हमारे जितने research project सब के हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 हैं 10 6 are by the females बड़ा नंबर है उनके प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं और फिर हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हमारी इसको मैंने आतिफ के थ्रू मैंने कहा कि शुड अप्लाई फॉर दैट सो आई थिंक देयर इज अ फुल स्केल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की पॉलिसी बड़ी सिंपल है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी और फीमेल स्टूडेंट वहाँ भी बहुत ज्यादा हैं फीमेल ट्रेनिंग ज्यादा हैं लेकिन मैं पिम्स के हवाले से बात करना चाहूँगा बड़े सीनियर सर्जन यहाँ बैठे हुए हैं why we failed to develop breast surgery unit in PIMS? Why we failed to develop vascular surgery unit in PIMS? Why we failed to develop colorectal unit? Colorectal unit CD hospital में है जैसा भी है ये देखा है हमने कि हमने स्पेशलिटी ओरिएंटेड यूनिट्स कैसे देखी है देयर यू सी ये आसान की ग्रेजुएट है और इसने बैरियाट्रिक सर्जरी तक पहुंची तो व्हाई नॉट हियर बैरियाट्रिक सर्जरी का यूनिट क्यों नहीं होना चाहिए सो आई ऑन द बेहाफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट यू कि बैरियाट्रिक सर्जरी का एमएस प्रोग्राम 2 इयर्स का शेड्यूल आते बैरियाट्रिक सर्जरी एमएस प्रोग्राम 2 इयर्स
apply, we will do that. He can directly enter into that program. You can be the first supervisor. इसी तरह हमारा पेट्रोबिलरी बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको करना चाहिए. ब्रेस्ट सर्जरी में सेकंड मास्टर्स प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फोरम. We are ready to support you. आप अप्लाई करें, सुपरवाइजर आपके पास हैं, ट्रेनीज हैं, ट्रेनर्स हैं, तो व्हाई नॉट? क्यों जी, कैसा है? मैं आए हैं डॉक्टर किशनदा should be the visiting surgeon for you. हम आपको थोड़ा बहुत आके सिखाएंगे ये इस तरह करना चाहिए, ये नहीं गलती करनी चाहिए. सो एक आखिरी पॉइंट जो जिस पे मैं करूँगा कि मेरे एक टीचर थे प्रोफेसर जॉन हरमन टेलर, वो यहाँ भी एक दो दफ़ा आए हैं, डॉक्टर सिकंदर के बड़े क्लोज फ्रेंड थे. उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात, उसने कहा जो सर्जन्स हैं चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, उनका पहला एक फेज होता है फेज ऑफ एग्रेशन. ये होता है फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज. आप कितना जल्दी सर्जन बन जाए. फेस ऑफ एग्रेशन वो होती है जिसमें से मैं भी गुजरा हूँ, आतिफ भी गुजरा है, अयूब साहब भी गुजरे हैं, सब गुजरे. चीजें तोड़ देनी है, आप भी गुजरी हैं. चीजें तोड़ देनी है, इंस्ट्रूमेंट फेंक देने हैं, और उसको असिस्टेंट को डांटना है, उसको निकाल देना है, डीस्क्रब करा देना. दिस इज फेस ऑफ एग्रेशन. देन देयर इज अ फेस ऑफ पेशेंस. ये पेशेंस की फेस है फ्रॉम 40 to 55. मेरे में जरा जल्दी आ गई थी, 50 ईयर्स में आ गई थी, लेकिन 55 से इसे ऊपर नहीं. इसमें आप फिर वो एक ठहराव जो है ना बनाना चाहते हैं. एंड देन देयर इज अ फेज ऑफ सुपर पेशेंस. जिस फेज में हमें और अलीफ साहब हैं, अलीफ साहब छोटे हैं मुझसे, लेकिन हमें डॉक्टर चंदा भी सुपर पेशेंस में आ गई यहाँ. So ये दोनों मेल और फीमेल में एक जैसे अकॉर्डिंग टू जॉन हरमन, वन ऑफ द लीडिंग प्रोफेसर जो है उसका बेस्ट का है. तो इसको हमने इस पॉइंट से भी देखना है कि ये एक सर्जन की फेजेस ऑफ लाइफ. आपका क्या ख्याल है इस पर? ऐसा ही I've not heard of these 3 cycles, but I totally understand. You understand. You की जो बात होती है कि one will accept the problem, very question आती है. Very good. तो इसमें जो आप मेरी अब जो प्रोफेसर राणा भी आ गए, प्रोफेसर राणा हम बात कर रहे थे स्पेशलिटी ओरिएंटेड यूनिट्स की उस पे. So we can have a discussion later on that. So there's a long on MS in bariatric hepatobiliary and the surgery. From your hospital in मेरी मर्जी हमेशा साथ शामिल होती है, प्रोवाइडेड कि कोई भी प्रपोजल जो है वो रश है नैलिटी के साथ जो है वो डब की जाए और कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज. मतलब ख्वाहिशात तो मेरी बहुत सारी हैं कि आई शुड डू ऑल काइंड ऑफ स्पेशलाइज जो स्पेशलिटीज है, लेकिन जो देखना है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे सपोर्ट करता है. अब जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमारी, मतलब yesterday I was conducting a rounds of bone marrow transplant. We have just 4 beds. की ख्वाहिश ये हो कि जी I just need to improve the number of beds कि मैं उसको 10 पे ले जाऊँ. क्या मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? So the wish list has to be supported with the ground reality. So I'll definitely support अगर इस तरह की कोई hurdle नहीं आती है. It is a need of super specialization. I agree with you. और अगर इस तरह की कोई proposal आती है तो definitely we'll try to facilitate. तो ये सारे आपके पास प्रोफेसर्स बैठे हैं, तो I think you can sit together and I just have a question. एक जो point I think वैसे सब आपने भी कहा था कि इतने हम पढ़ा रहे हैं लोगों को फीमेल सर्जरी टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आगे जाके क्या करें द एट्रिशन रेट, क्योंकि अगर आपने भी बताया मेडिकल स्टूडेंट एप्लीकेशंस कम है, मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स आर फीमेल्स. फिर अगर वो सर्जरी में जाती हैं फिर आगे से चली जाती हैं, तो हमारा तो फ्यूचर जो है सर्जरी का इज लुकिंग प्रीटी ब्लैक. अनलेस वी कम अप विद अ सॉल्यूशन कि फीमेल सर्जन्स को हम रिटेन कैसे करें. So I think the subspecialist might be a solution. If a female wants to focus on breast surgery, उनका path आसान होना चाहिए, not like what Arifa went through.
तो I think that will also help you retain your work, क्योंकि 10 सालों में आपके पास सर्जन ही नहीं होंगे. That's true. Actually, इसके ऊपर भी काफी सारा हमने वर्कअप किया हुआ है कि why the female are not actually, because my induction in the medical college is more than 80% is related to the female gender. लेकिन at the end of the day, not even 50% of these remain practically जो है in the field. So what we have studied is these are the social factors basically जो कि उनको divert कर देते हैं from their practical lives. Social factors. These social factors are not in control of the government of Pakistan or the executive director or any मतलब जो है बंदा जो policy making के ऊपर है. Definitely we need to facilitate them. Or I am determined to facilitate my female colleagues like anything. लेकिन जो limitations आप prescribe कर रही हैं कि जी लोग नहीं होंगे. अब पाकिस्तान के जो रूल्स फ्रेम हुए उनके अंदर रह के बहुत मुश्किल है चीजों को मैनेज करना. हमें डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लोगों को बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी and we have to come up with some solution and I'm very happy that at least people are talking about this. जी इसीलिए this was very important, but मैं मैडम फाइनल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि we should have होता है कि your participation as a female इस projects उसके लिए जरूर come up with some project. यूनिवर्सिटी आपका फॉरवर्ड करेगी HCC को, फीमेल सर्जन्स हैं उनकी. and one project could be like projects जो आपने कहा social, right? Social में बात आई breastfeeding की, day care की, उसको जी commenting on personal life की शादी हुई नहीं हुई, ये चीजें तो कंट्रोल में हो सकती हैं. This is a micro environment. आप अपने इंस्टीट्यूशन अपने डिपार्टमेंट का कल्चर सेट कर सकते हो कि जी बाहर हो जो मर्जी हो, मेरे ग्राउंड्स में ये नहीं होना चाहिए. जैसे हमारी ओबेसिटी में भी हमें पता है जी कि एक मोटापा जो है लोग बहुत ही सोशली स्टिग्मेटाइज बीमारी है, लेकिन मेरे चार दीवारी में किसी मरीज को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि जी हम आपको डिफरेंट देख रहे हैं क्योंकि आपका वजन बढ़ा है. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स आप कर सकते हो. उससे ये होगा कि लेट्स स्टार्ट विद पेरेंट्स. यहाँ पे माशाल्लाह लाइक लॉट ऑफ टैलेंट. अगर ये फील करें कि जी अगर हम शादी करें, हम बच्चे हमें लेकर सोल्यूशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, फीमेल सीनियर मेंटरशिप है, डॉक्टर रक्षंदा कर चुकी हैं, इट इंस्पायर्स मी, मैं भी कर सकती हूँ. आरफा ने किया है, मैं भी कर. तो जब प्रोजेक्ट बोल रहे हैं जस्ट दीस 4 वॉल्स, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन इसका कर सकते हैं. एंड देन यू कैन बी अ टॉर्च बेयरर. जैसे आप खान टॉर्च बेयरर जी क्यों उनके ग्रेजुएट्स फर्क है. You can be a torch. We have provided an excellent place for female surgeons to come work. कहाँ से फ्लॉप की है? क्योंकि ultimately females तब बड़ा मसला है और फिर weakness जो है ना वो फिर इनको strength करानी चाहिए. दूसरे भी हैं, mandatory भी हैं, daycare center का सारी काउंसलिंग, ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखने की जरूरत है. आई थिंक देयर शुड बी एक्शन इन दिस. आप जैसे कि कह रही प्रोजेक्ट होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ आप काम करें ना, फीमेल को के और आप सॉल्यूशन बनाओ. You have to be an active participant. Right, be a participant. We are not concluding it. हम सिर्फ एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं. आप लोग आज जितने भी आ सकते हैं आज प्लीज. अरे कम ऑन दोस्त लोग क्यों आ जाओ यार, सबको पता. इमरान साहब
फोटोग्राफ लिखो मैं फेसबुक पे जाएगा। चलो जी फोटोग्राफ्स ले लें। वैसे टेक का 360 डिग्री फोटोग्राफ ताकि सब आ जाए उस पर। पैनोरामिक, नॉट पैनोरामिक, 360। अच्छा Thank you. Okay, I thank personally उनका बहुत बिजी शेड्यूल है और वो फ्यूचर को डील कर रहे हैं आज एमडीकैट के जरिए, तो आए अपना किस्मत निकाल के। राना इमरान साहब आप नहीं जा सकते अभी। सर मैं जरा एक तस्वीर लेने हाँ तस्वीर ले आओ बेशक। नहीं मैं किसी और चीज की तस्वीर ले रहा हूं। बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना Yeah, I do want to say thank you, बहुत शुक्रिया कि the vice chancellor साहब आप आए हैं and the director, because without people in leadership ये सब बातें हैं। तो आपका आना shows support and the females should acknowledge कि जी आपकी topic important है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे females ने आपको बोला कि जी कुछ होगा नहीं होगा। मैंने कहा जी ये this is the first step, अगर आप importance देते हैं आप सुन रहे हैं that goes a long way, तो बहुत मेहरबानी, thank you very much। बड़े अरसे बाद ईडी और बिस्किट रेस में। Hybrid regime, hybrid regime। 2 साल से नहीं थे जब से आपने ज्वाइन किया भैया। I think we have gone over time, right? Let's conclude. अच्छा, no, we're gonna open it up to the floor now, क्योंकि for the interest of time, अगर audience में किसी ने सवाल करना है, अच्छा मैं पहला सवाल करके थोड़ा अच्छा सा माइक्रोफोन दे दें मुझे। तो because working in PIMS, इन्होंने बात की थी, I had a medical officer, she got married, she was very good, she was very promising, and she got married, and her daughter had immense pressure from her in-laws. She had a very precious pregnancy as well. There was problem with the daughter as well, and then under the pressure of her in-laws, she had to quit permanent job of PIMS. If not, she would have been an executive surgeon and doing the senior staff work in my unit. So that's how we lose. Then there is another scenario, Zara, who is, please. Acha. Another pressure, Zara is my trainee here, and not because of her fault. Because when she was in her final years, COVID came. Couldn't get elective trainings. Then I couldn't train her like I trained her predecessors. So what I did, I found a place where she could get advanced laparoscopic surgical training, and that's a shame for us PIMS that a peripheral hospital can provide a training which we can't. She got trained in doing laparoscopic hysterectomy, bariatric procedures, top to bottom, laparoscopic. And she was wonderful. I got the reports from there as well. Then, under her family pressure, her father is on to serve the rural area. And she went to my supervisor there. So she has a distinction of working with the supervisor of the supervisor. But unfortunately, she couldn't get a proper laparoscope there. Otherwise, and now she is all rusted. So I invested, I got her in a place out of way and used my contacts, literally begged to that person that I want this girl to be trained. Unfortunately, due to COVID and then PWD, I couldn't train her. You know about PWD and everything. People looking here. So this is also a story how these girls, even when equipped, cannot deliver because they have added pressures than us men. We have also pressure. We have to take care of the family and all those things. Now the journey is coming where both husband and wife have to be the earners of the family. Otherwise, it is very difficult for a single earner. So, hats off to these women who have stood against the challenges and still have accomplished. Dr. Khanna, probably
first surgeon of Indian Islamabad, and I'm witness to her working in as a medical officer in Phil, although I was a student, but just because that she was working in a department which was led by my father and her supervisor, who was my supervisor as well. So I had a knowledge of what Dr. Shanda was doing at that time as well, through trickle-down effects. And then I worked with her as well. And she had one of the finest hands and best suited for Highton dissection. And many more things. So we learned a lot. And yesterday in master class, I was reminding her that you told me this. So these things go away. One more thing. See, she female surgeon, but once I told someone who isn't probably said that, sir, there is a mass in abdomen. I said, have you seen the scrotum? There was a missing testis. Said, how come you know? I told this was taught to me by Dr. Shanta to me in the OPD room. One day I was examining and he said, Atif, if there is a mass in a male, always check the scrotum in the pelvic region. So these things carry on. So being a female or a male, I don't believe there is any difference. There is a famous quote by George Firstly, who is the inventor of that, the Lebanese American surgeon. He says, he's very deadly against the robot for some reasons. He says that there is no skill. You talk about dexterous hand, you talk about surgical hand. He says it's the mind which guides the hand. So we are always talking about the hand, kiska skill hai, this is the mind. And this mind can be developed by male or female both. We both have a lot of pressures, a lot of stresses. Females, I agree, have more stigma associated, but within our cultural and religious norms, they can excel as well. It is difficult, but still they can. I give you one more goal. Hazrat Umar appointed first government servant. Who was that government servant? Not a Sahaba, not a Ghazali, not a very big name. She was a lady, I'm forgetting her name. She made her in charge of price control in the market. Because women at that time were also going to the market and buying things, and he said to that woman, you are the price control officer. And during his very first cabinet meeting, Majlis Shura, a woman stood up and said, Umar, you don't know anything about something about divorce and something related to that. And Umar then said, yes, you are right. So women has played a role. Hazrat Fatma, Hazrat Khadija, Khadija was an independent woman. अच्छा फिर बोला हमारी रिलीजन के अंदर फिर जो उम्महातुल मोमिनीन और जो हमारी इनिशियल सहाबिया थी, they were in the war front with our brave sahabas. So they were working. हज़रत उमर की बीवी ने उन्हें कहा, जब तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नहीं रोका हमें मस्जिद में आने से, तुम क्यों कौन होते हो रोकने वाले? उन्होंने कहा वो शहर फैल गया है, रात के टाइम अंधेरा होता है तो देयर कैन बी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ये प्रॉब्लम है. उनका एक्सक्यूज था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं रोका. अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी खवातीन को मस्जिद से भी बाहर निकाल दिया, which is really bad. I was very happy. एक कैप्टन में जनाजा हुआ, वहां पे औरतें भी आई थी जनाजा पढ़ने, जो कि बहुत कम देखता हूँ. तो there are many things जिसमें हमने अपनी खवातीन को पीछे छोड़ा है. So it's time to ask them to come and walk along with us. Not leave us behind. There is some excellent points. Thank you very much. I think for the interest of time, I'm going to request all of you to think कि जी हर बंदे का एक रोल है, चाहे आप female हो या male. Females need to look अपने आप के अंदर and say, okay, अगर हमारे male teachers ने हम पे support और investment की है, तो how are we going to deliver? Right? तो क्योंकि the onus is on us as well. Secondly, जब एक प्रॉब्लम होता है वहां पे एक सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है. Don't ever go with a problem without thinking of a solution. तो अगर आपका प्रॉब्लम है, let's say breastfeeding, मैंने सोचा है, I feel कि ये solution हो सकता है. Would you like to approve? And that conversation will go much further. ये पाकिस्तान की बात नहीं है. This is my experience that I learned in America. Don't go with any problem without a solution. तो एक हमारी culture mentality कि जी pointing fingers दूसरी तरफ. आप पहले अपनी तरफ देखो. As a female, I'm telling all the females. And as a male, आप भी देखो. आपका क्या right बनता है कि किसी female को बोले कि आपकी शादी के लिए. I'm very
very annoyed कि जी जो डॉक्टर आरिफ आनी है ना, तो मैं घर के उन्होंने इतनी ब्रेवली यहाँ पे आके अपनी पर्सनल बात शेयर की है, बड़ी हिम्मत होती है वो। लेकिन आपका क्या हक बनता, किसी का हक नहीं बनता, चाहे वो मर्द है या औरत। You have to draw a line of professionalism. यहाँ पे professionalism जो है ना part of the culture, वो औरत मर्द का नहीं है, ना वो status का है ना डिग्री का है, वो है professionalism। और उसमें we need to be mindful of that। चाहे वो आप डॉक्टर नहीं, नर्स, डजेंट मैटर क्या पोजीशन है, हर बंदे का रोल इम्पोर्टेंट है। नर्स के बगैर आप अस्पताल नहीं चला सकते, सफाई करने वाले के बगैर आप अस्पताल नहीं चला सकते, हर बंदा बहुत जरूरी है, पर वो तो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। Anyway, I wanted to ask people जो पीछे बैठे हैं to please raise your hand अगर किसी का सवाल है, because I'm sure कि आपके पास है, and I don't want you to feel कि मैं बोल नहीं सकती, because this is the time to speak up। तो ये बहुत जरूरी है। तो if anybody wants to please stand up and ask and share, this is the time, please। I'm Dr. Ispa, and I've been working here. And even when you enter in medical school, you feel the respect from the society that they give you of being a woman and then being a doctor. Then the patients respect you so much that they are looking for a female surgeon, and then they, they're leaving all the male surgeons and then they're coming to you. So you feel a lot of respect on that. And I have seen supervisors who say that I want my student to be more, and I'll be more happy that I have trained this surgeon. So this is what we are looking for. If all people would be, not discriminating that this is a female surgeon or a female student or a male surgeon, like Dr. Kshanda said, that gender is not what we're talking about here. We should leave it out of the door when we enter the hospital. And similarly, all these things that you were just talking about, that breastfeeding initiative should be taken. There should be a 24-hour daycare setup. Maybe a unit can make it themselves. Maybe the administration can help us when we take the matter to them, and then these issues can be resolved. Also, I really feel that the female seniors should be there for the, and they should. Places I have seen some senior female colleagues are not helping the junior female colleagues themselves, which is the worst barrier ever. The male cannot hinder you that much, how much a senior female can hinder you. So that's bad. But I'm really obliged to a few people who are sitting here that our jury was very smooth in that aspect, that the senior females were there to help you. And even if you're a single female in the entire surgical unit, sometimes you can survive with your own strength. Like we were just talking about, you should be strengthful, but yes, still we should pick up a few points so that we can make it a more smoother ride for the other people. I think दो points हैं जो female mentorship जो है ना, जो हमारी females हैं, you have an obligation, एक obligation है कि आपने अपने junior को help करनी, because आपने बोला ना डॉक्टर रक्षंदा कि अपना ego gender gap छोड़ो, coming from a woman, it will be like चलो advice है, अगर यही बात एक male बोले तो बोले कि देखो ये हमारे साथ discriminate कर रही है, तो this is very powerful जो आपका role है as female mentor. Ma'am, it has to be a lot of positive psychotherapy, a lot of positive support to the girls who are working with us as trainees. Because I would say, हम कहते हैं कि यहाँ पर अब 70% बल्क जो है मेड स्कूल का वो women है, यही 70% बल्क तो ये होम्स भी तो इन्हीं बच्चियों ने बनाने हैं ना, ये सारी औरतें अगर घर छोड़ के निकल पड़ेंगी तो ये घर कैसे बनेंगी? और ये सारी बच्चियां जो आएंगी फील्ड में, it is their biological right to enjoy their relationships with their spouses, to have kids, to have beautiful homes, and they have beautiful minds up there. So it has to be flexible hours, flexible shifts, flexible timings in their careers. I always tell my trainees कि बेटा जो women है ना, then there is no need to be competitive as men. They have different focuses in life. God has blessed us with so many things, so many colors in our life. और हमने उसमें से कोई भी miss out नहीं करनी. Like it is your biological right to cook pizzas for your family. Nobody can stop us from doing that. Not our professions, not our hospitals. We have to enjoy all of them. It has to be flexible hours.
a more positive approach and kind of patience with their careers. कभी कभी career बहुत तेजी से आगे जा रहा होगा, कभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा, कभी हम 3 days a week की job shifts ले लेंगे, कभी हम जरा माठिया हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे छोटे होंगे हम वो relationships enjoy करेंगे, हम अपने घर enjoy करेंगे और फिर हम भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एक just action item एक मैं suggest कर सकती हूँ that I've benefited from myself from American College of Surgeons. They have a mentorship program जहाँ पे female surgeons mentor junior female surgeon. I've gone through that. I was a mentee. पहले 5 साल जब आप training के बाद पहले 5 साल आप apply करते हो कि जी I want coaching. They book you up with a woman surgeon जो आपसे ज़ाहिर है is no longer in the 5 years, कहीं पे भी हो सकती है in the country, and they set up frequent phone calls. अच्छा, this is how I balanced बच्चों का child care. यहाँ पे पाकिस्तान में तो child care बहुत आसान है. आप हमसे पूछें how difficult it is कि आप बच्चों को छोड़ के आप काम पे जाओ, ना वहाँ पे आपको एक मिनट लेट हो सकते हो और ना बच्चों के लिए आपके पास कोई हेल्प है. Very difficult. तो वहाँ पे उनके problems में solutions उन्होंने create किए हैं. And the other thing I would request a coaching mentorship एक होती है, coaching एक और चीज. Coaching is कि जब बच्चों आप खुद स्टूडेंट से जब वो पढ़ गया हो सर्जन आप उसे एक्सट्रैक्ट करो, तुम क्या करो, क्योंकि जो हमारी मेंटालिटी है ना, हमें बताओ हमें क्या करना. We need to graduate from that. वो स्कूल में खत्म हो गया. When you're out in your practice, you now need a coach जिसमें आप डिपेंड नहीं करोगे. आपको कि मेरा प्रॉब्लम है और कोच ने बोलना अच्छा what do you think you should do? What do you think you should do? That's the difference between a coach and a teacher. क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा सा बंदे के ऊपर self reliance भी है. I think one of the problems being a female in Pakistan, we have a tendency कि जी हमारा मसला है कौन सॉल्व करेगा. नहीं, हमारा मसला हमने खुद सॉल्व करना. अगर हमारे ये बैलेंस वाले वर्क आवर्स हैं तो I would suggest females come together as a task force, come up with ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, टेक इट टू एडमिनिस्ट्रेशन से. इनके पास टाइम नहीं है टू सिट एंड फिगर आउट योर प्रॉब्लम्स. यू नो योर प्रॉब्लम्स बेटर देन दे डू. ठीक है, तो यू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड देन वो बैक एंड फोर्थ में दैट्स अ पार्टनरशिप, राइट? वी नीड अ पार्टनरशिप. वी डोंट नीड pointing fingers and dependence. So I think you, does anybody else have any questions? इतने लोग बैठे हुए हैं, want active, बिल्कुल बिल्कुल. Hello, I am Dr. Farhad, HO General Surgery Team P. Ma'am, I have a question that how can success stories of female surgeons be shared to motivate parents to support their daughters' surgical careers? And what early interventions in medical school can reduce the dropout rates among women interested in surgery? All excellent questions, and I'm really happy. As a male, you're obviously thinking about this. I think कि यहाँ पे वो जो आप कह रहे थे ना social pressure, मैं भी खुद भी बहुत social pressures में से गुजरी हूँ. Throughout residency, कोई ना कोई जी इससे मिल लो, उससे मिल लो. My mother's obsession was इसकी शादी किसी तरह हो जाए, right? So I've gone through that myself. So I would love अगर जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये कि we have to do a stepwise approach. आप empower करें जो अपनी females यहाँ पर हैं to come together and create some kind of an association of society, a women in surgery. उसमें ये सारे matters हों. अगर हम parents की बात है, we can invite कि सबकी जी पहले माँ बाप जो है ना किसी और के माँ बाप से बात सुनेंगे तो वो ज्यादा उनको मानी रखेगा. अगर मैं या आप उनको बोलेंगे ना आप अपनी बेटी को सर्जरी में करने दें, इनकी हो जाएगी शादी, डोंट वरी, वो कहेंगे आपको क्या पता. लेकिन अगर मेरे माँ बाप उनको बोलेंगे ना, बोलेंगे अच्छा ठीक है लड़की थे. यू हैव टू डिलीवर द मैसेज द राइट वे. ठीक है, तो आई थिंक कि उसमें थोड़ा सा थॉट एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है जो एक obviously meeting में नहीं हो सकता, but this is the start to start the conversation. और मेरी request होगी to form a women in surgery chapter. बेशक प्रेम से शुरू करें, and that's where we invite the parents of all these females. And से आपको क्या concern है जी? डॉक्टर साहब आप क्या नाम है? सनाया. आपका? डॉक्टर ज़हरा. डॉक्टर साहब
बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के। यू आर प्रोबेबली द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन इन द ग्रुप। बहुत खुशी हुई। और आपका ये देख के भी बड़ी खुशी हुई कि आप पेरिफेरी में और रूरल एरिया में काम करते हुए भी यू आर स्टिल सो पॉजिटिव। बहुत खुशी हुई आप। मैं जिसकी बात भी करना चाह रहा था, देखें बात ये है कि जो माशरे के मसाइल हैं वो माशरे तक हैं। हम इदारे में बैठे हैं, हम इदारे के लोग क्या कर सकते हैं? क्या इदारों में कोई मसला है? इदारों में और लोगों में मसला नहीं है। मसले दो हैं। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास पूरी मैन पावर नहीं। तो जो मेल कोलीग्स भी हमारे हैं वो बियॉन्ड देयर ह्यूमन कैपेसिटी उनको काम करना पड़ता है। उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने भी अपनी जवानी गंवा दी है काम में। ये जो बायोलॉजिकल की बात की डॉक्टर साहब ने, ये एक जैसे यूके की बात कर रहे हैं। मैं यूके जब गया तो वहाँ पे मैंने अपने अपने यूनिट का वहाँ पे उनको फोटोग्राफ दिखाया। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए कि आपके जनरल सर्जरी में इतनी खवातीन है। कहते हैं कि हमारे पास तो ये मेल डोमिनेटेड विषय। उनके लिए बड़ी अजीब और गरीब बात थी कि इतनी ज्यादा खवातीन आपके डिपार्टमेंट में। और हमारे तो डॉक्टर क्षमता 80s से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमारे तो एक माहौल है हमारा कि खवातीन को आपने कैसे अकोमोडेट करना है। तो ऐसी बात नहीं है। तो जो अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस हैं, मुझे अगर हैं तो मैं सिर्फ इसको यूं कर लूं कि अगर हम सिलेक्ट करें कि मैं कहूँ कि जी मर्द होने की वजह से मुझे ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, तो हुआ है ना। तो ये डिस्कशन मुझे बड़ी अजीब अजीब सी लगी। आई एम सॉरी। ज्यादा इस बात पे है कि आपकी जो जैसे ये यूके की इन्होंने बात की ब्रेस्ट फीडिंग की, और वो एक सोशलिस्ट टाइप कंट्री है। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फलाही गवर्नमेंट है, वहाँ से सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से है। तो अगर आपको शिकायत है तो आप गवर्नमेंट से करें, आप शिकायत अपने कलीग से तो न करें। तो आई आप इस चीज को पॉजिटिवली देखें। मैं तो ज़ारा से बहुत इम्प्रेसिव हूँ कि शी वाज सच अ पॉजिटिव पर्सन। Thank you very much. जब मैं इंटरव्यू हुआ था तो आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाट टॉपिक इट्स गोइंग ऑन। डॉक्टर अक्षंदा, We hit the topic deliberately. मेरी डॉक्टर अक्षंदा से have been बात तो 2000 में हुई थी। I joined as an anesthetist, and I always had been a huge admirer of surgical skills, and she being the female surgeon, we are doing lot of work, and she has been. ये तो मेरे मैडम के बारे में बड़े छोटे भाई वाले जो वो है मुझे बात है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। हमारे दीन ने फीमेल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। माँ का कहा हुआ कि जो है वो जन्नत उसके कदमों तले। सोसाइटी में एज ए होल देखें तो बेतहाशा किया जाता है, सिलगेट किया जाता है बेतहाशा। मतलब वी रिस्पेक्ट। मैं अगर अपने ऑफिस में कोई जूनियर फीमेल भी, कोई बहुत जूनियर फीमेल भी हो तो मैं हमेशा उसको, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खड़ा होकर मिलूं। एंड दिस इज नॉट मी ओनली, दिस इज मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड, जो कि जो है वो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्टफुली। और लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कुछ मसले मसाइल हमारी वर्क प्लेस पे हैं तो दिस इज द वेरिएशन फ्रॉम द वर्क प्लेस एथिक्स व्हिच इज implicated on both sides. हम वर्क प्लेस एथिक्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं, और शायद हमें ये वर्क प्लेस एथिक्स जो है वो पढ़ाया भी नहीं जाता है, not in our curriculum at any stage, neither to the male nor to the female. This is a huge deficiency. और जैसे कि मेरे साहब ने कहा, ये फ्लेक्सिबल आवर्स नो डाउट जो है वो
यूके में या यूरोप में, आप वर्क देयर एज वेल, वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान का जो ये सर्कल है, जो सरकारी सर्कल है, वहाँ पे फिक्स चीजें हैं, तो हम बहुत सारी चीजें अरेंज करते हैं। लाइक कोशिश की जाती है कि फीमेल ड्यूटी रूम्स जो है वो हो सेपरेट हो, टॉयलेट्स सेपरेट हो वार्ड्स के अंदर, और जो डे केयर सेंटर्स जो है वो हमने कोशिश की है कि उनको किसी तरीके से मेंटेन किया जाए, एंड दैट इज ऑल रिसोर्स इंटेंसिव। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू एम्फसाइज ओवर द workplace settings. That is the most important. Yes. I I agree एक with आध you से 100%. बचती वो है। प्रोफेशनलिज्म में भी आ जाता है और जी, उसमें जी। मर्दों के भी मसले और औरतों के भी ताली मसले कभी address- एक हाथ से नहीं बचती, बिल्कुल हमेशा दोनों हाथों से ताली बिल्कुल। बचती। और मेरा ख्याल है, मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक, मतलब इन माय एनवायरनमेंट, कोशिश की है या देखा है जो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि 99% जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाता है फीमेल सोसाइटी वाइज, रिलीजियस खवातीन को इम्पोर्टेंस देते हैं ज्यादा, सोसाइटी में फैसिलिटेट कर। एक आध कोई अगर इंसिडेंस होता है तो इस तरह का, दैट कैन बी जो है वो सॉर्टेड आउट, वो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। बहरहाल वो मैं उस लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी फीमेल्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो वाई टू मेक ओनली सर्जरी, फीमेल जो ग्रुप बनाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनानी, वाई नॉट के जो है फिल्म्स के अंदर वर्किंग जो खवातीन है बिल्कुल। वो दिस इज बिटवीन द इंस्टीट्यूशन कि आप लोगों ने यहाँ से कहाँ आगे चला। बनाए। और क्योंकि हमारे पास जो नई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स आ रही हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स आ रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी फीमेल्स, और they should come up with the solution with their problems, and very rightly commented by yourself कि मुझे क्या प्रॉब्लम है ये मैंने डिफाइन कर, फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम है ये उन्होंने डिफाइन कर, and they should come up with the solution। और फिर उस solution के साथ जो है वो मेरा रोल आ जाता है कि हाउ टू फैसिलिटेट इनके अपने, मेरे रोल से मुराद ये है कि जो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में कमांडिंग पोजीशन पर बैठे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सीनियर्स हैं, एंड बिलीव मी, this is going to change in next 20 years. All the females will be sitting on the commanding position. तो इसको जो है वो मेरा ख्याल है ऐसे होलिस्टिकली देखा जाए, और जो ज्यादा एम्फेसिस मैं अगेन बार बार वही एक ही बात कह रहा हूँ, वर्क प्लेस एथिक्स, क्योंकि बहुत सारे जब इंसिडेंट्स उनको जब प्रूव किया जाता है पता चलता है कि जब ताली दोनों हाथों से बचती है। So these are my Bill, and this is why the last part was going to be solution of करेंगे क्या। So some of the solutions जो मैं summarize करना चाहूँ कि एक तो ये कि we have to empower the females to come together, चाहे वो आप women in surgery बोले, women in medicine बोले, women of films बोले, जो मर्जी आप नाम बोले, लेकिन एक ग्रुप जो females जो इधर काम कर रही हैं अदारे के अंदर रह के, not out in the माशरा, यहाँ क्योंकि यहाँ की प्रॉब्लम्स हम बोल रहे हैं, हम बाहर की प्रॉब्लम वो तो लंबी, वो तो एक टाउन हॉल से कभी नहीं बंदे कवर भी नहीं कर सकता। तो आके फिर ये get together and outline the problems, outline the possible solutions, and then we see where we can meet, and then we come up with a plan कि जी चलो ये तो first step हुआ, अगले साल हम इधर एम करें, उससे अगले साल इधर एम करें। तो जिसका कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो ये होता है कि हमने जाना इधर है, लेकिन हम ओवरनाइट उधर नहीं जा सकते, लेकिन हम स्टेप वाइज करें ताकि एवरीबॉडी फील्स कि चलो मेरी आवाज कोई सुन रहा है, मैं मैटर करती हूँ या मैं मैटर करता हूँ, और देयर इज सम होप। तो उससे जो आपका एट्रिशन रेट है ना, जो डिससैटिस्फैक्शन है, जो हर डॉक्टर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एज एन अदारा यू हैव टू थिंक अबाउट योर वर्कफोर्स के बगैर तो नहीं काम चलेगा, चाहे वो, और रियलिटी है वर्कफोर्स इज बिकमिंग मोर फीमेल। तो भी हम बात घूम के ही करें तो बेनिफिट ही अदारा, नॉट जस्ट द फीमेल। बट फीमेल्स के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि जी men and women are not equal and we all know that, and men and women की problems are unique,
And we have to be able to acknowledge that and be open to hearing कि औरतों के क्या मसले हैं। मैंने भी अपने इसलिए मैं खुश हुई हूँ मैं कि आप ही बोले, लेकिन ये कहना कि जी ये तो तुम्हारे मसला है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? That's wrong, because ultimately that will affect the employees' ability to work, ability to stay in the job. वो अगर खुश नहीं होगा उसने कहीं और रास्ता ढूंढना है, फिर आपके पास एम्प्टी स्पॉट है, फिर आप कहेंगे ओ ये तो औरत थी ये चली। आपने ये नहीं सोचा कि क्यों गए, वो आनी नहीं चाह रही। अगर नो वुमन, कोई औरत अपना घर छोड़ के सर्जरी जैसी डिमांडिंग फील्ड में नहीं जाएगी टू लीव इट। वो इसलिए छोड़ती है क्योंकि वो she was put in a crossroad जिसमें बहुत टफ डिसीजंस होते हैं। तो कोई पर्सनल होते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन ड्रिवन होते हैं। हम पर्सनल वालों की सोल्यूशन नहीं कर सकते, पर इंस्टीट्यूशन ड्रिवन तो कर सकते हैं, करना चाहिए। और फिक्स नहीं कर सकते सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन इन रियलिटी ओनली नीड इज अ 10% improvement. Tony Robbins is a very famous motivational speaker. I've attended his course क्योंकि as a woman, as running my own business, I'm a woman entrepreneur. मेरी अपनी practice थी, business थी हमने सीखी। ना medical school में, ना residency में, I don't come from a family of business people. मैं क्या करूँ? I was getting stuck. I went and I attended his course. पूरा course business में नहीं था. पूरा course was basically on attitude, mental जो आपने कहा है, and all the other things जो आपको करना है। लेकिन one of the things जो business का मैंने उससे सीखा, and I'm just sharing this, कि if you make a 10% improvement at every step, आपका जो ultimate outcome होगा ना will be infinitely higher. And that was game changing. मैं भी सोची थी कि मुझे ये कैसी मैं सारी चीजें करूँगी to compete. I'm just telling you कि मैं I practice 30 minutes outside Manhattan. मेरे हर अस्पताल में 5 to 6 bariatric surgery groups हैं, surgeons की groups हैं, और हर 5 से 10 मील पे एक bariatric accredited hospital है। और उसके बीच में I have to start and do marketing and provide call about full patients. मैं 100% independent हूँ। एक पाई नहीं मुझे कोई हॉस्पिटल देता है, ना मैं इंश्योरेंस से लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। It takes a lot of effort. तो competition जो है ना, how to build up the business and running an institution, just running your home. I learned that you don't need to fix the problems. You just need a 10% improvement. आज हम 10% improvement किस चीज में करें? 10% improvement, the results will be exponentially high. सारे problems देखेंगे तो कभी हम ये कहेंगे भाई किसी और ने करना है। आप देखो आपने क्या करना है और मैं क्या 10%, हर बंदा आज 10% improve कर सकता है सब easily. So that would be my little sharing of what I learned. मेरा intention नहीं था to go into Tony Robbins, but I think the way the conversation was going, I felt like it would be hopefully helping something. चलिए जी, बहुत time जी। I have just one little comment. Basically, already highlighted. Dr. Rana said some really important things Yeah. on his first talk over there when he just joined us about the social issues. Sort of address the issues that pertain, and I think it's not a surprise to any one of us. We just have to, this town hall concept was, opening up about what you feel. Yeah. Right? I'm one of the good boys, right? I make my own tea. I cook, I eat my own meals, right? I have a working woman. at Well home. raised, My kids are some of the best kids in the world because they've learned how to be independent. They're not, they're not spoon fed. And I feel that, they stand above in the community as well as kids, with more responsibility. Now, the point that you mentioned about, workplace problems that females have, you actually started off with a solution when you mentioned about having an association. Now, there are two ways to come about all of this, right? I mean, if you're in America, that there are the congressmen and statesmen, and you have the senators, we have the same problems here as well, right? You have an institution that you can work from, you've got the role models there. You've got a role model institute that's in the center of the country, I mean, this is the capital. And, you sort of generalize when you say only pimps. Dr. Azra and I, we used to work in the same institution. Fortunately, I resigned. Thank you. Right? Yeah. Good for women. Good for women. Like leadership qualities like yours and like the women on the desk in this panel. It's impressive. I'm really thankful. I wish my wife was here to see you guys. And you guys are real role models. Thank you for coming in and coming up with all those ideas. But now you haven't come up with a plan. And the plan is you either start from within an institute with role models and an association,
or you use the association to get it about politically and deal with the social issues from the outside. Now, the problem, like Sir mentioned, was you got medical colleges, you've got training opportunities, and with each step that goes by, the women are cutting down. They cut down. So, like, if I look into my life just a few years ago, I had social issues. I had big issues, and I was the sort of a guy who always had this. My mom, she was very, very obliged about it. She was a different mother-in-law, and she said that, son, listen, you have to realize the fact that your wife is not an ordinary woman. She has the same potential that you have. It's very unequal. It's injustice for her not to do a job, for her to sit back home and deal her. Why didn't you just marry a housewife? Why didn't you marry an uneducated woman? And that's what I learned from my mother. And that's, I think, her mother's play a role within families. And now, there was a time when they were, they were so protective about each other. And now, like, they're really good friends. And they actually discuss amongst themselves about me. He's off to Afghanistan. Oh my God. Can you stop him? Like, this is what relationships are all about. Some relationships take time. Mind you, we usually get married around 25, 28 here in Pakistan, right? And I think it's the next 10 years that decide who's going to pull out, who's going to stay back in. And that is the point where we have to set role model examples. And I think it has to be on public. Unfortunately, the women thing here in Islamabad some years ago was politicized. The Aurat March and stuff like that, right? See, women are biologically different, right? But they're super women. I can't do what my wife does, right? And in that process, she doesn't have the laparoscopic skills that she would have had if she didn't have the burdens of the social responsibilities. And I realize that. So that's the realization that I think all men should go with. That is also, now, when you talk of a role as a father, no father in this office, all these men sitting here, they want their tea served on the table in the morning, but they don't want their daughters to do it. And you have to think that somebody's daughter is now with me. And that feeling grows in from within, and it's a culture. Now, how are we going to change the culture? Right? It has to be through social aspects, come out politically, come out on the social media platforms. There's association that actually regularly shares information, success stories to motivate people. And the far-flung women, I've been to your place in Skatu, and I have probably been to where you live, I think. I mean, the people over there, the women, right? The thought process is different than the Pashtun people. It's totally different. So the problems over there are different. You can't compare these two things. So if this association is a more broader way to just send out the message, and I think that's a start. So I think bringing it back from यहाँ पे हम institution के अंदर क्या कर सकते हैं और actionable items और मेरा request होगी कि आप please within yourself have a follow up in 6 months. कि जी सब मिले और फिर देखें कि where have we gone from today to 6 months, क्योंकि वो that's the most important thing कि हम within institution हम कैसे change ला सकते हैं. I think we've taken up a lot of time for allowing me to do this. And if I offended anybody, I don't apologize. But thank you. I'm happy to, really happy to offend. Okay. I have a solution for your tea problem. I don't drink tea at all, and my wife is so happy about it. The thing is that I had this idea for quite a few years, and when Dr. Sanaya and I came into contact in the beginning of this year, I think. Yeah. So she told me that she is, as a bariatric surgeon, she has definite goals for working with the women and adolescents, and then as their career, which American women also face, they are no different, very hardship. So I came up and I said to her, why not do it? And she agreed, and I'm happy that this has happened. This has been recorded on Zoom. Although it is the quality of this, I think they should not stop talking about politics and they should come to the real issues. There is Dawn News here, thanks to my class fellow. Otherwise, you don't get them here. They're always running after politicians or celebrities or sportsmen, but not talk about education, health, and other issues for the public. So I would now conclude this session. I will request the executive director to come up and close the session for us.
You have talked a lot, but just few minutes. It's a routine matter for us. Thank you. And I'm thankful to my panelists for coming up from their, taking time out of it and sharing their experiences and being very forthright. That was so refreshing to see. Talking those things which have become taboos and which people are afraid to talk about. As I said, I'm happy to offend. काफी डिस्कशन होगी मेरा ख्याल है मैं बहुत ज्यादा लगी चढ़ी डिस्कशन नहीं करूंगा या फिर बात नहीं करूंगा और कोई चीज रहती भी नहीं है आई डोंट थिंक दैट वी आर लेफ्ट विद एनी स्पेशल थिंग व्हिच आई नीड टू एम्फसाइज एनीवे क्योंकि ये चल रहा था मेरी एथिक्स की मतलब मैं उसको ऊपर जरा थोड़ा सा आई विश टू हाईलाइट I think I was the anesthetist who started the first bariatric First. and anesthetized and I do remember that it was the anesthetist who was the better for But I think more important. furthermore, जो है वो I would like to highlight Professor Rutledge. Yeah, Rutledge. Rutledge, an excellent human being and an excellent surgeon in the bariatric. And I think it was a sweet gesture to start with. Introduce median gastric bypass. I think further away, keeping in view the protocols, the resource constraints, but I'm pretty happy today that down the line, 10 years, we have excelled a lot in this particular specialization, and I keep on watching and keep on seeing his posts on the social media as well. And his, I think, private जो practice वगैरह कर रहे होते हैं NDP की वो भी सारी चीजें मेरी नजर में से गुजर रही हैं. For years you have been my anesthetist. How can you miss it? Of course. So coming back to the bariatric, definitely I would love and I would encourage people to join this specialization too. I myself is a little fitness freak. Keep on doing a lot of exercise. Even now, 5-6 kilometer running to make running, proper running. So just to keep myself fit, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वो running नहीं कर सकते. So definitely the remedy has to be provided. Or after doing a lot of anesthesia work in bariatric, I've seen a lot of patients who are morbidly obese, have a lot of other issues. And definitely the anesthesia is quite a tricky thing, doing anesthesia of the bariatric patients. So a big hand of applause for the Dr. Atif Shami for और मैं दूसरे अपने डिपार्टमेंट्स को भी इंकरेज करूंगा जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं सर्जरी में they are also doing wonderful things, to be honest. With the minimum resources, they are doing wonderful things. Almost 8,000 surgeries, not a small number. तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा और जो है वो मैं उनको भी इनकरेज करूंगा कि बी पॉजिटिव और इस तरह की जो जितनी भी जो है वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं वो करवाएं. मेरा ख्याल है काफी हद तक जो है ना वो ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट्स आ जाती है, लोग इनकरेज होते हैं. मैं जैसे डॉक्टर मुमताज इज डूइंग लॉट ऑफ हेपेटोबिलिटी वर्क, तो आप प्लीज हेपेटोबिलिटी के मामले में भी कुछ 2-4 जो है वो करवाएं. ज्यादा टाइम नहीं दूंगा और
एक चीज मैं आपको शोर करता हूँ कि जी ये जो फीमेल्स हैं, ये सारी मेरी बहनें बेटियां जो यहाँ पे बैठी हुई कोलीग्स हैं, ये किसी भी प्रॉब्लम के सिलसिले में आए मेरे पास विद सोल्यूशन, जो कि being a female इनको इस सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे हो रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई शो यू कि आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. They should come up and let's say come up with a solution, doable solution within keeping in view our जो है limited resources. I'll try to stretch my resources as much as I could, and at the end of my words, I am thankful that आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया और मेरी जो है वो बातें सुनी. Thank you very much. I thank all of the panelists and teachers for their very good time. We've ended the session now. Yeah.